हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ फ्रॉम 20th जून 2023। नाउ लेट्स लुक एट द न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज हाई कोर्ट एडमिट्स रिव्यू प्ली बाय माइती बॉडी एंड ऑन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। So यहाँ पे one of the reason for the violence which erupted in Manipur was that the Manipur High Court earlier had asked the state government to decide on the status of Meitei community to be included in scheduled tribe. But now the Manipur High Court has admitted a review petition. ठीक है, रिव्यू मतलब कि जो उनका जो पहला जजमेंट था जहाँ पे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था टू कंसिडर गिविंग एसटी स्टेटस टू मैती कम्युनिटी। नाउ दिस हैज़ बिन अब यहाँ पे रिव्यू पिटीशन इसको फाइल आउट किया गया। तो ये जो मणिपुर हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो मार्च 27, 2023 को आया था। अब इसमें इस जजमेंट में क्या था, दैट इट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ मैती कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। फाइन। So now this was contested by Kuki tribes and other tribes in Manipur, which led to the violence which started on May 3. Now the court has issued notice to the union and state government on Monday seeking their response by July 5. Now if you will see the review petition, it has been filed by Meitei Tribes Union, which was admitted for hearing by bench of Acting Chief Justice M.V. Muralidharan. तो इन्होंने ही ऑथर्ड किया था मार्च 27 का ऑर्डर विच वाज पास्ड ऑन एन इनिशियल रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द यूनियन। नाउ द नेक्स्ट इज पंजाब स्टेप्स इन टू हेल्प कर्नाटका विद इट्स फ्री राइस स्कीम। सो अन्न भाग्य स्कीम है कर्नाटका गवर्नमेंट का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो नाउ हियर द कर्नाटका गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू प्रोक्योर राइस फॉर इट्स अन्न भाग्य स्कीम। तो ये अन्न भाग्य स्कीम में क्या है, that 10 kg of food grains is going to be provided to BPL families and Antyodaya card holder. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे, so see, under the scheme, the state plans to enhance free rice given per person in a below poverty line card from 5 kg to 10 kg, and this is estimated to cost the exchequer rupees 840 crore per month and rupees 10,090 crore annually. Now what is the problem over here? So we have discussed it earlier that now the union government has decided to exclude the states from open market sale schemes. So now जो नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट को जो राइस और वीट मिलता है सेंट्रल पूल से वो अब उनसे बाहर थे। So several states who run this type of schemes, so they were struggling. So अब कर्नाटका को हेल्प करने के लिए now पंजाब has stepped in to help कर्नाटका with its scheme. फाइन। तो यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट है पंजाब की, इट हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू सप्लाई द रिक्वेस्टेड क्वांटम ऑफ राइस टू कर्नाटका। सो पंजाब ऑफर टू सप्लाई राइस केम आफ्टर द आम आदमी पार्टी कर्नाटका यूनिट टुक द इनिशिएटिव टू इंटीमेट द स्टेट गवर्नमेंट दैट पंजाब हैड इनफ राइस एंड वाज विलिंग टू सप्लाई टू कर्नाटका इन द फेडरल स्पिरिट। और एडिड टू दिस वी विल रिटर्न लेटर। लेट्स टेक सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज मोदी बिडेन टू डिस्कस एवरी इशू रेलेवेंट टू इंडिया यूएसए। तो यहाँ पे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं इज आउटलाइनिंग द मीटिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्ड दैट इज बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट। So here our foreign secretary Vinay Mohan Kwatra has said that every global and regional issue that is relevant to India and US, it is expected to feature in the bilateral dialogue that Prime Minister will hold with the President Joe Biden. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें टॉक्स बिटवीन टू लीडर्स, सो द डिस्कशन विद द टू लीडर्स विल आल्सो इंक्लूड इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20। सो ये है। देन अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी है साउथ एशिया में वो भी चल रहा है इस वक्त, लाइक पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और म्यांमार में। Then if you will see, the US has taken several steps including the imposition of ban on visa to disruptors of democracy in election bound Bangladesh. So as a result of these factors that are unfolding in India's vicinity, so there are expectations that Modi-Biden talks may also take up regionally significant developments. Now one of the major highlights, if you will see, that is the annual event. The visit will start with the annual event under the United Nations. Okay, that is on the occasion of International Yoga Day, which is celebrated on 21st June. Then the next focus will be defense industries, industrial companies. Okay, so which is the now new component under the relationship.
Now the next is India gives INS Kirpan to Vietnam, focuses on enhancing defense relations and security. So ये हम एशियान की बात कर रहे हैं. तो एशियान में there are 10 countries. Okay, in ASEAN there are 10 countries. तो एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. तो उसमें से एक कंट्री जो है वो वियतनाम है. Now if you will see the relationship between India and ASEAN, so now they are at the level of comprehensive strategic partnership. So now if you will see that we recently India ASEAN maritime exercise भी हुआ था, which the sea phase was held in South China Sea and the harbor phase in Changi base in Singapore. Now the next news under that is that India has gifted the indigenously built in-service missile corvette INS Kirpan to Vietnam. ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. नाउ टू एनहांस इट्स नेवल कैपेबिलिटीज. ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट INS Kirpan. So INS Kirpan, it is a Kukri class missile corvette displacing 1,350 tons and it was commissioned into the Indian Navy on January 12, 1991. Now if you will see the background, तो जून 2022 में इंडिया और वियतनाम दे साइंड एन MOU on mutual logistic support in presence of the two defense minister when Mr. Rajnath Singh visited the Southeast Asian nation. Then the defense ministers, they have also signed the joint vision statement on India-Vietnam defense partnership towards 2030. उसके बाद हनोई मतलब वियतनाम का कैपिटल, it has procured 12 high-speed patrol boats for the Vietnamese border guard force under $100 million line of credit, which was extended in 2014. Now, from the factual point of view, two things will be very important over here. One is who is our defense minister, Sri Rajnath Singh, and who is Vietnam defense minister, then General Phan Van Nguyen. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रिलेशनशिप जो इंडिया और एशियान कंट्रीज में जो बिल्डअप हो रहा है उसका एक हाईलाइट मिलता है हमको, ठीक है ना. तो इफ यू विल सी दैट बोथ मिनिस्टर्स दे हैव आइडेंटिफाइड मीन्स टू एनहांस एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन स्पेशली इन फील्ड ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन. तो डिफेंस के उसमें अगर आप देखेंगे तो कितने टाइप के कोलैबोरेशन हो सकते हैं. तो सी डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन. नाउ the next is president's rule is the last option in Manipur. Government will wait and watch. So यहाँ पे if you will see तो मणिपुर के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. That one is the president rule, इसकी बात हो रही है. दूसरा किसका बात हो रहा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में रिटर्न इन मणिपुर. फाइन. So if you will see that several organizations they have demanded the imposition of president's rule in the state due to the यहाँ पे जो मेन रीजन है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रस्ट डेफिसिट है. अगर याद होगा तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक पीस कमेटी बैठाई थी जिसमें 51 मेंबर्स थे. तो बहुत सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिए जस्ट बिकॉज they said that in this peace committee जो है वहाँ पे N. Biren Singh who is the chief minister of Manipur, he is also there, so that's why they do not want to participate. Then many tribal groups like Kukis, they are also demanding separate administration for their areas. So now see, ये वही चीजें जो हैं अब अलग अलग तरीके से देखिए डिमांड सामने आ रही हैं. The first is that several organizations they have demanded the imposition of president rule in the state due to perceived and known bias in the state administration and security forces. Okay, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे see the level the problem, the MLAs from the Kuki tribe including those from the BJP have blamed the state police for planning attacks against the community. The dominant जो Maithi community है, they have accused the Assam Rifles of helping the Kuki insurgent groups. Okay, तो ये different charges लग रहे हैं. Fine. The next is dilemma regarding the continuance of Manipur Chief Minister N. Biren Singh in the post. So here also there is a problem that removing him at this juncture when the state is going through a very critical point, it could alienate the Maithi community more and it could also lead to president's rule. उसके बाद यहाँ पे president's rule will also mean that take over by the central forces. ठीक है,
and then it can see the return of instruments like Armed Forces Special Power Act 1958. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पास्ट में सेंटर हैज वर्कड वेरी हार्ड टू विड्रॉ AFSPA फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग मणिपुर। ठीक है, तो अगर फिर से अगर ये लगता है AFSPA, तो जो ये पूरा प्रोसेस जो बहुत सालों से चल रहा है which resulted into normalcy returning in the state which can again deteriorate. Then there are reports that Meitei organizations in the US have planned to organize protests in Washington DC during Prime Minister Narendra Modi's state visit to US. Fine. Then if you will see the Association of Meitei in the Americas, they have announced a demonstration at Lafayette Park in US Capitol on June 22. If you will see जो retired जो वहाँ पे यूनिफाइड कमांड है which is headed by retired Central Reserve Police Force Director General Kuldeep Singh, they are also facing issues with multiple reporting channels. So if you will see this command, it was announced by Home Minister Amit Shah during his visit to the state from May 29 to June 1. अब यहाँ पर अगर हम मणिपुर की अगर बात करें तो more than 40,000 army and central armed police force personnel have been deployed in the state, and there are 3 verticals at present operating in the state. That is, अभी जो यूनिफाइड कमांड है इसका नाम क्या है? इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड। इसके चीफ कौन है? तो CRPF के फॉर्मर डायरेक्टर कुलदीप सिंह। Okay, so if you will see that then there is the combined headquarter strategy and operations group and the operational intelligence wing. If you will see AFSPA का status मणिपुर में, so out of the 92 police stations in Manipur, AFSPA has been removed from the limits of 19 police stations and all of them are in the valley. So if the army they have to conduct an operation where AFSPA is not there, then the civil staff such as executive magistrate have to be recautioned, which leads to a loss of precious time. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि if army starts operation in Manipur, they start managing the law and order, तब उन कुछ जगहों पे फिर AFSPA जो है वो फिर से लगाना पड़ सकता है। Okay, the next is maintaining law and order. So the officials have said that the police was deeply divided on ethnic lines and they were seeking the help of the central forces. So if you will see, the central forces are being deployed in buffer zones, the areas where the hills and valley occupied by Kukis and non-Meitei tribal, they merge. Until now, more than 50% people have been displaced in the ongoing violence. ओके, सो दीज आर द हाइलाइट्स। अब ये जो है पूरा आर्टिकल है, ये एक टाइप का पूरा रिवीजन आर्टिकल है कि अभी तक जो हुआ है क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा आपको एक आर्टिकल में यहाँ पे मिल गया है। देन इफ यू विल सी देयर आर मैनी वुमेन ट्रेडर्स फ्रॉम मणिपुर हु आर नाउ protesting and they are questioning the silence of Prime Minister. Right? So Manipur will see 75 imams or mothers from the famed woman-only Khwairamban Ima KIP market of Imphal. They arrived in Delhi, insisting that they would leave only after the Prime Minister addressed the situation in Manipur and present a concrete solution. The next is Uniform Civil Code, part of Directive Principles of State Policy, says Rajnath Singh. ठीक है, so that's correct factually that Uniform Civil Code is part of the Directive Principles of State Policy. Okay, so here you can write me in the comment box that in which article of the Constitution the Uniform Civil Code has been mentioned. Then again let's have a revision once again that Gandhi Prize is a great honor, says Geeta Press, declines cash award. तो जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि गांधी पीस प्राइज, इसमें ईयर इंपॉर्टेंट होगा, गांधी पीस प्राइज 2021, दिस वाज अवॉर्डेड टू गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो यहाँ पे गीता प्रेस ऑन दे हैव डिक्लाइंड द कैश अवार्ड। ओके, मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड द अवार्ड बट यहाँ पे आप देखेंगे जो कैश अवार्ड है वो उन्होंने डिक्लाइन किया। सो दे आर सेइंग that it was a matter of great honor to be conferred with the Gandhi Peace Prize, but added that it would not accept the cash component of the award, keeping with its tradition of not receiving any kind of donation. तो यहाँ पे if you will see this award, that is Gandhi Peace Prize, so the recipient they get rupees 1 crore, a citation, a plaque, and then execute traditional handicraft or handloom item. चलिए अब गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में देख लेते हैं। सो गीता प्रेस गोरखपुर, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923 and it is one of the world's largest publisher of Hindu religious text. The next is United Nations Rights Chief seeks to establish presence in China and India.
So see, the United Nations Human Rights Chief has called for greater political support for expanding the work in China and India. So if you will see the High Commissioner, so Volker Turk, who is the High Commissioner, so he during his speech in Human Rights Council, so he has said that that greater cooperation is required for many countries like Syria, Iran, Israel, Russia, Algeria, that it could work more in this area. Now next, that is senior IPS officer Ravi Sinha appointed as next chief of law. So again, now this is very important. Now the appointments committee of the cabinet, which is headed by the prime minister, so it has appointed senior Indian police service officer Ravi Sinha as secretary research and analysis wing. Fine. So Mr. Sinha, he will succeed Samant Kumar Goyal, so who will complete his 4-year tenure on June 30. So Ravi Sinha, he is a 1988 batch IPS officer of the Chhattisgarh cadre and is currently special secretary in the cabinet secretariat. अब यहाँ पर आप देखेंगे ACC, that is Appointment Committee of Cabinet, they have approved Mr. Sinha's appointment as Secretary Raw for a tenure of 2 years. The next is Ladakh leaders meet Union Minister demand statehood. So Minister of State for Home Nityanand Rai, he has met a delegation from Ladakh who want a statehood and constitutional safeguard for Union Territory. यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है लद्दाख का जो डिमांड कर रहे हैं that this Union Territory should be included in K6 schedule of the Constitution that provide protection for tribal areas. Okay. Now the other demands which are included are that सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है ना, ले लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी आती हैं, ले और कारगिल. एंड देन नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज. नाउ द नेक्स्ट इज जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन रिपील्ड, वी ऑल नो. एंड देन द स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो इसमें से जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट लाइक दिल्ली, बट लद्दाख इज द यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली. द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिस्ट ऑथर इम्तियाज अहमद पासिस अवे एट 83. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो आपको नाम दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो पर्सन जो है ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड. फाइन. So Imtiaz Ahmed, he is sociologist, author and former professor of Jawaharlal Nehru University. He passed away on Monday. He was at 83. Fine. So यहाँ पे if you see Professor Ahmed is known for his work on caste in Islam. Then he has also has worked in social anthropology and he had taught sociology, political science and Islamic studies in various universities in India and abroad. So if you will just see some of his important work. Okay, so if you will see, so this caste and social stratification among Muslims in India, which was published in 1973, is considered his seminal work. The next is United Nations adopts first ever agreement to protect marine life in high seas. So member of the United Nations, they have adopted the first ever treaty to protect marine life in high seas on Monday. Fine. So if you will see the treaty, it has been under discussion for more than 20 years to reach an agreement, okay, for protecting the marine life in high seas. So there are various sustainable development goals. So write me in the comment box the sustainable development goal which is related with life below water. The next is Xi meets Blinken as China US agree to stabilize relations amid tensions. So यहाँ पे if you will see the Chinese President Xi Jinping, he has met with the US Secretary of State Anthony Blinken in Beijing. So here the effort was to normalize the relationship amid tension. अब यहाँ पर टेंशन क्या है, तो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे हमने देखा था कि जो एक चिप मेकिंग कंपनी है यूएस की, ओके, माइक्रॉन, उसको चाइना ने जो है वो काम करने से रोका हुआ है. ठीक है, उसके बाद ताइवान इश्यूज चल रही हैं. फाइन. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग ऑन. So if you will see that both sides are looking to pave the way for Mr. Xi and Mr. Biden to meet later this year for the first time since Bali. So this can happen in G20 in India or at the APEC summit in US in November.
The next is Europe is world's fastest warming continent. ठीक है. So according to the World Meteorological Organization and EU's Copernicus Climate Change Service, so Europe should brace for more deadly heat waves driven by climate change, said a report. So it says that it is the world's fastest warming continent with 2.3 degrees Celsius hottest last year than in the pre-industrial times. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 2.3 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. ये यूरोप की बात हो रही है. अब इसको अगर आप कंपेयर करो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट से, तो उसने क्या बोला है दैट 2 डिग्री सेल्सियस आइडियली एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था. ठीक है. बट यहाँ पे यूरोप में कितनी राइज है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, इट इज 2.3 डिग्री सेल्सियस. सो ड्राउट्स, record sea surface temperatures, glacier melts are among the effects laid out in the report by the World Meteorological Organization and EU's Copernicus Climate Change Service. So if you will see the warmest summer on record last year, so France, Germany, Italy, Portugal, Spain and UK, they are experiencing the warmest year on record. The next is UN slams gender apartheid in Kabul. तो यहाँ पे if you will see the UN's top expert on rights in Afghanistan has urged countries to consider making gender apartheid an international crime. Okay, so यहाँ पे तालिबान के टेक ओवर के बाद जो वुमेन राइट्स को जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान में, तो ये उसके रिलेशन में द UN टॉप एक्सपर्ट ऑन राइट्स इन अफगानिस्तान हैज अर्ज्ड द कंट्री कि जेंडर apartheid को एक इंटरनेशनल क्राइम बना दीजिए ताकि इसको टैकल किया जा सके. The next is Finance Minister calls for efforts to push farmers to cultivate millets. तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन urges NABARD. Now what is NABARD? It is National Bank for Agriculture and Rural Development, established in 1982. It is a statutory body headquartered in Mumbai. Okay, so ये जो बैंक है, so this bank works for agriculture and rural development. इसका अपना एक फंड भी है, that is called as RIDF, Rural Infrastructure Development Fund. तो वो नाबार्ड का है. तो इसको कहा गया है to increase the land area cultivated with millets and improving rural income and protecting the returns of farmers who are growing millets. Okay, so millets, it has been announced as Shri Anna in the Union Budget 2023-24, and 2023 is the International Year of Millets. Okay, these are two important things. And third is that India is the largest producer of millets in the world. Fine. So what are the benefits of millets? So if the farmers they shift to the cultivation towards millets, so it is less water intensive crops. Okay, and it also enhances the income of the farmers. Now let's take one liner. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, which of the following airlines announced record order of 500 Airbus A320 family jets? So the answer is Indigo. So budget carrier Indigo has announced a firm order of 500 single aisle aircraft of Airbus A320 family, making it the single biggest ever civilian aircraft purchase deal. The next is Spain shoots out Croatia in tense final, clinches Nations League title. तो यहाँ पे this is very important that Spain, which country has claimed the National League title? So it is Spain. उसके बाद the next is one liner again, who has won the Canadian Grand Prix? So the answer is Max Verstappen. He has won the Canadian Grand Prix. Now the next is World Refugee Day. Refugee as assets to their new countries. So today is June 20th. Okay, so today is World Refugee Day. So if you will see that World Refugee Day, we honor the courage and resilience of the 103 million individuals who have endured forced displacement due to conflict and unrest worldwide. ठीक है, fine. So see refugee. ठीक है, तो यहाँ पे जो forced displacement होती है, ठीक है ना, so it creates the condition that people taking refuge in other country. Fine. So whenever there is a conflict, there will be displacement of people and definitely there will be refugees. For example, let's take an example at home. अभी जो आपने मणिपुर के बारे में पढ़ा, that 50,000 people have been displaced. That is also because of conflict. So now Russia-Ukraine crisis is going on. Crisis in Myanmar, Sudan is also going on. Afghanistan, Somalia. So they all
pose up unprecedented challenge and it leads to displacement of people, creating refugees. So if you will talk about India, so India is home to about 250,000 forcibly displaced persons, with women and children constituting half of that population. Now it says that India continues to graciously host and assist refugees and asylum seekers within its territory. ठीक है, this article talks about mainly refugee youth. Fine. So refugee youth, उनका क्या है problem? So they also want opportunities, not handouts. They also wish to be self-reliant and eager to use their talents and passion to contribute to the communities who are hosting them. Fine. So if you will see that refugees and asylum seekers, they encounter too much of obstacles. पहली बात तो उनका legal recognition, then challenges in obtaining government issued documents. So all these challenges hinder their access to essential services, which includes financial support, healthcare. These are challenges of refugees. Fine. तो अभी हमारे किसी भी स्टेट के लिए ज़रूरत क्या है कि ये जो बैरियर है इसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि दे कैन बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर. फाइन. देन द नेक्स्ट इज देयर इज द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज. इसको आप नोट कर सकते हो. द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज, इट एक्नॉलेजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस एंड कॉल फॉर सॉलिडारिटी थ्रू अ whole of society approach. So the second point is it is built on the understanding that the responsibility towards the forcibly displaced is not limited to government but also extends to each one of us, including individuals, private sector, non-government organizations and community-based organization. इसका मतलब क्या है कि refugee welfare is a multi-stakeholder approach. What type of approach should be adopted over here? That is multi-stakeholder approach. कि सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है रेफ्यूजी वेलफेयर, ठीक है ना. It should embrace all the section of society. Fine. Then it also recognizes that the global south is disproportionately affected and that host communities need assistance. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ, जिसके बारे में बात बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, that is developing countries. So they are mostly affected by it and they need assistance. उसके बाद ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी है, इट स्ट्राइव्स टू एनहांस द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, सपोर्ट होस्ट कंट्रीज, प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सच एज रीसेटलमेंट एंड सेफ रिटर्न. Okay, so these are the highlights of global compact on refugees. Now let's talk about India. So now if you will see, the government of India का एक विजन है, विकसित युवा विकसित भारत. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये क्रिटिकल टाइम है कि जब हम जो यूथ रेफ्यूजीज हैं उनके बारे में भी सोचें, ठीक है, और उनको भी अपने देश में मौका दें आगे बढ़ने का. एक वन लाइनर यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है. ये क्या कह रहा है? इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज विकिपीडिया, उर्दू, हिंदी एंड तमिल आर लीडिंग. सो अमंग लैंग्वेजेस मोस्टली कन्फाइंड टू अ स्टेट, तमिल डोमिनेट्स विद ओवर 1.5 लाख आर्टिकल्स. ठीक है, पूरे विकिपीडिया में देयर आर 320 लैंग्वेजेस, ओके, which includes 20 of India's scheduled languages. The next is decoding the Adani report. Decoding the Adani report. जब ये अडानी इशू हुआ था जनवरी में, जब हिंडनबर्ग ग्रुप ने ये अलेज किया था that अडानी ग्रुप was engaged in stock manipulation and money laundering. Fine. तो Security and Exchange Board of India was asked by Supreme Court to investigate whether there was a violation of Rule 19A of Securities Contracts Rule 1957. ओके. अब इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए सेबी ने 2 मंथ का एक्सटेंशन लिया है. अब सेबी को ये रिपोर्ट सबमिट करना होगा अगस्त 14 तारीख को. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक्सपर्ट कमेटी बैठाया टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर हैज बीन रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद द फ्लाउटिंग ऑफ लॉज बाय अडानी ग्रुप. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप सेबी को देखेंगे तो सेबी वाज डायरेक्टेड टू प्रूव वेदर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल 1957 वर वायलेटेड. फाइन. यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर इज रूल 19A. ये कहता है कि कोई भी कंपनी हो जो लिस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, दे हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग. ठीक है, ये पहला इसको करना था. सेकेंड वॉज दैट वेदर देयर हैज बीन अ फेलियर टू डिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द रिलेटेड पार्टीज टू सेबी. ओके. उसके बाद इफ यू विल सी कि सेबी ने 2 महीने का एक्सटेंशन लिया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 मेंबर कमेटी बैठाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 6 मई को.
और उस रिपोर्ट ने कहा है कि दैट एक्सपर्ट कमिटी हैज़ फाउंड नो रेगुलेटरी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सेबी। ओके, अब देखिए सेबी क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है यहाँ पे। सेबी इट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटिंग 13 सस्पेक्टेड ओवरसीज एंटिटीज। यहाँ पे 13 ऐसे ओवरसीज एंटिटीज हैं हु आर मोस्टली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड दे आर बेस्ड इन टैक्स हेवन्स लाइक मॉरिशस। तो ये यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है कहीं ये अडानी ग्रुप के फ्रंट कंपनीज तो नहीं थे। फाइन, so if you will see that ये जो 13 FPIs हैं, they have significant shares in 5 listed Adani group of companies like 15.5% in Adani Enterprises Limited, 18% in Adani Transmission Limited, 17.9% in Adani Total Gas, 20.3% in Adani Green Energy Limited and 14.1% in the Adani Power Limited. अगर आप देखेंगे प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग इन दी 5 लिस्टेड अडानी ग्रुप कंपनीज टिल मार्च 2020 इट वाज अबाउट 74%. फाइन, ओके, दैट सेबी despite its suspicion and investigation however has been unable to unearth the ultimate beneficial owner of these overseas entities till date. ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 13 फ्रंट कंपनीज की बात हो रही है इनके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन है ये अभी तक पता नहीं लगा है। फाइन, then the inability to establish prima facie contraventions has been affected by successive amendments to SEBI regulations related to FPI as well as listing obligations and disclosure requirement. तो एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि इसको पता न लगा पाना इज बिकॉज ऑफ सक्सेसिव अमेंडमेंट्स इन सेबी रेगुलेशंस। फाइन, so if you will see a vital restriction on FPIs having an opaque structure was repealed and the definition of beneficial owner in FPI regulations and related party transactions in LODR regulations were diluted through successive amendments in 2018 and 19. तो इसी अमेंडमेंट को द रिपोर्ट से अडानी ग्रुप ने इसी लूप होल को जो है वो यूज किया है। Okay, so it says that amendments opened regulatory loopholes enabling the Adani Group promoters, especially Vinod Santilal Adani, to conceal the ultimate beneficiary owner of the 13 FPIs. उसके बाद सेबी ने क्या किया? So SEBI has approached the Enforcement Directorate and CBI to further investigate to establish a prima facie case against these 13 FPIs. ठीक है, ये 13 FPIs जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए अब अगेन प्रॉब्लम है, ये ईडी और सीबीडीटी दोनों ने कहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि दैट दे कैनॉट अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन अनलेस सेबी रजिस्टर्स अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड टैक्स लॉ वायलेशंस। सो द एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट हैज कैरेक्टराइज्ड दिस इन्वेस्टिगेटिव पैरालिसिस एज चिकन एंड एग प्रॉब्लम। चिकन एंड एग प्रॉब्लम समझते ना आप, क्या होता है कि पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया। ठीक है, नाउ अब ये जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है 2018 और 19 वाली, तो देखिए अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा। सी दिस अमेंडमेंट्स to SEBI regulations have resulted in complete subversion of Section 12A of SEBI Act 1992. अब ये Section 12A SEBI Act क्या कहता है? It explicitly prohibits contrivances and devices that are structured to bypass the law, enabling security frauds and insider trading. फाइन, अब देखिए एक रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। सी इट सेज a notable aspect in the price movement of Adani scripts is that their sharpest rise occurred when the 5 listed Adani companies were already under the SEBI scandal since October 2020. The next is the expert committee report reveals that 849 alerts were generated vis-a-vis the share of Adani Group companies through SEBI's automated surveillance system between April 2018 and December 2022. इन सारे 849 alerts में से 603 were related to price volume movements, while the remaining 246 alerts were related to suspected insider trading, जो SEBI Act allow नहीं करता। अब SEBI जो है it has reported the 603 alerts were closed after processing the same as per approved standard operating procedure. Work is in progress on 246 alert. तो प्राइस मूवमेंट के बारे में SEBI ने रिजॉल्व तो कर दिया इशू, बट इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। अब देखिए दिस पैराग्राफ अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट नाउ। सी व्हाट इज पैराग्राफ इज सेइंग दैट SEBI's public silence on the unprecedented rise in Adani scripts since October 2020, even when the companies were under investigation following complaints, alongside its unwillingness to register a case of regulatory non-compliance and legal violations against the Adani Group,
promoters till date compromise prima facie evidence of regulatory failure and SEBI's complicity in these contraventions. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है कि जो स्क्रिप्स इश्यूज थे, अनप्रेसिडेंटेड राइज जो हुए थे, उस पर सेबी का एक पब्लिक साइलेंस है और यहाँ पे केसेस भी जो है वो रजिस्टर नहीं किए गए. द नेक्स्ट इज, अब जो सेबी का जब केस चल रहा था तो इसमें LIC की भी बात चल रही थी कि LIC का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है क्या. तो सी द लार्जेस्ट बायर ऑफ AEL शेयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज इफ यू विल सी 2021-22 was Life Insurance Corporation of India, which bought around 4.8 crore shares. अभी जो 13 suspected FPIs है, they were among the top net sellers during this period, having sold around 8.6 crore share. तो अब ये AEL की जो प्राइस मूवमेंट है, therefore mainly contributed by LIC and 13 suspected FPIs, and yet the SEBI has so far concluded that it is impossible to conclude that they had a hand in the price rise because they were net sellers during this patch. चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन ले लेते हैं. So what can be the conclusion? So see, despite collecting and presenting a large body of evidence of regulatory failure, the expert committee has drawn ambivalent conclusions. जैसे कि at this stage, taking into account the explanation provided by SEBI, supported by empirical data, it would not be possible for the committee to conclude that there has been a regulatory failure around the allegation of price manipulation. Fine. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.